Sri Aksaya Vata, Mandal, Uttar Pradesh, India. The village of Kajarotha is situated around 1 kilometre from Sri Tapovana and 2.5 miles north of Gangaroli. East of the village is the temple of Sri Rama-Sita, and next to that Sri Rama-Sita Mandira is Sri Aksaya Vata. Behind the village is Gadibhima. At this place Sri Balarama killed Pralambasura. How to get there? You can easily go to this place by auto from Vraja. सब तीर्थों के राजा हैं या केवल धाम। प्राग से आए थे, प्राग से आकर के उन्होंने दर्शन दिया है। राम लखन जानकी अयोध्या से आए थे, उन्होंने अयोध्या से आके दर्शन दिया है। लड्डू गोपाल जी ने यहाँ दर्शन कराए हैं। अपने माता पिता नंद बाबा नंदरानी ग्वाल बाल सखा सबको दर्शन कराए हैं यहाँ इन्होंने। नंद बाबा यहाँ सारे राम भगवान की सेवा करते थे। इन सारे राम भगवान की सेवा करते समय लड्डू गोपाल ने अपने ग्वाल बालों के साथ में यहाँ देखा, गौ माता को चुवाने के लिए आते थे लड्डू गोपाल जी ने देखा कि मेरे बूढ़े बाबा नंद बाबा क्या करते हैं। तो उन्होंने जब देखा कि ये पत्थरों से लगे रहते हैं, लड्डू गोपाल ने पूछा कि नंद बाबा आप क्या कर रहे हो? तो जो मेरे बेटा साले राम भगवान हैं। माने अच्छा ठीक है, ये तो पत्थर है, आप पत्थरों से लगे रहते हैं और मैं तुम्हारे सामने साक्षात भगवान घूम रहा हूँ, जो भी मांगना है मेरे से मांगिए, इनसे क्या मांगते हैं। इस तरीके से बोलते हुए नंद बाबा ने कहा, माने ठीक है लड्डू गोपाल तुम ही मेरे भगवान हैं, ये भी मेरे भगवान हैं। माने अच्छा ठीक है। उस दिन चले गए, दूसरे दिन लड्डू गोपाल जी फिर आए दोबारा से। फिर आकर के उन्होंने जब देखा तो यहाँ नंद बाबा अभी तक सेवा में नहीं आए हैं, तो माने उन्होंने उठा करके सारे राम भगवान को अपने मुख में रख लिया। और उसको रखने के बाद में बट वृक्ष पर चढ़ गए। पीछे से नंद बाबा आए, नंद बाबा ने आके ना देखा कि मेरे यहाँ साले राम भगवान नहीं है, साले राम भगवान को कौन ले गया। इस तरीके से यहाँ चिल्लाते हुए चारों तरफ सबको आवाज़ देते हुए तब कहा माने कि अरे मेरे साले राम भगवान को कौन ले जा रहे, ग्वाल बाल सखाओ कहाँ हो? तो सभी ग्वाल बाल सखा सभी आए यहाँ पे। आकर के उन्होंने सभी ने मना कर दिया। फिर उसके उपरांत नंद बाबा ने आवाज़ दिया कि काना मुरली वाले कहाँ हैं? सबने मैं बता दिया कि हमको नहीं पता है। तो नंद बाबा यहाँ से बाहर गए, बाहर जाके बट वृक्ष के नीचे खड़े होकर आवाज़ देते हैं, अरे काना मुरली वाले आप कहाँ हो? तो ऊपर बट वृक्ष से आवाज़ आता है हूँ। अरे काना मुरली वाले कहाँ हो? हूँ। बार बार इस तरीके से वो आवाज़ देते हैं ऊपर से। तो काना मुरली वाले के मुख में साले राम भगवान रखे हुए थे, इसलिए उन्होंने बार बार जो नंद बाबा ने उनको आवाज़ दिया, वाले अरे लड्डू गोपाल कहाँ हो आप? तो बार बार इस तरीके से आवाज़ देते थे। नंद बाबा ने कहा, अरे लड्डू गोपाल आप ऊपर लता पताओं छुपे बैठे हो, मेरे यहाँ से साले राम भगवान को कोई ले गया, कहाँ गए? तो मुझे नहीं पता है। इस तरीके से लड्डू गोपाल जी ने बार बार मना किया। फिर लड्डू गोपाल जी से नंद बाबा ने कहा, अरे लड्डू गोपाल आप नीचे आ जाओ, गिर जाओगे। तो नहीं आऊँगा। इस तरीके से बार बार नंद बाबा ने उनसे कहा, प्रार्थना किया, तो वो नहीं आए। फिर उसके बाद में यहाँ से नंद बाबा नीचे से बुजुर्ग थे, ऊपर वट वृक्ष पर गए। ऊपर वट वृक्ष पर जा कर के उनको लड्डू गोपाल जी से कहा, अरे लड्डू गोपाल आप नीचे चलो, आप ऊपर क्यों आ गए? तो नहीं जाऊँगा। तो इस तरीके से उन्होंने नंद बाबा ने बार बार प्रार्थना किया उनसे, वो नहीं आए। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं चलोगे? तो मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ करके चलूँगा। तब उनको अपनी पीठ पे बैठा करके लाए नंद बाबा लड्डू गोपाल को, और नीचे ला करके तब उनसे कहा माने कि लड्डू गोपाल मेरे यहाँ साले राम भगवान थे, उनको कौन ले गया? तो मुझे नहीं पता है। तो नंद बाबा ने तुरंत ही माने कि आपके मुखों के अंदर क्या है, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? तो मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने इस तरीके से कहा। उन्होंने इतने में नंद बाबा ने उनके गाल पे उंगली मार दिया, तो वो साले राम भगवान निकलाए। और साले राम भगवान जैसे निकले तो नंद बाबा ने दोनों हाथों में ले लिया, ले करके उनको माने ठीक है काना मुरली वाले, आज तुम्हारे माता पिता भी आ रहे हैं और ग्वाल बाल सखा हैं और नंदरानी आ रही हैं नंदगांव से, और नंदगांव के सभी लोग आ रहे हैं यहाँ दर्शन के लिए। तो हम ठीक है कि नंद बाबा क्या करते हैं वहाँ, मैं साले राम भगवान की सेवा करता था। मैं साले राम भगवान को श्री जी स्नान करा लाता हूँ। तपोवन महाराधा रानी मिलेंगी, गुंजाओं को फूल लेके आऊँगा। तो गुंजाओं को फूल लेने के लिए और साले राम भगवान को श्री जी स्नान कराया तपोवन पे। श्री जी स्नान कराने के उपरांत तभी से यहाँ पे स्थापित है बोलो साले राम भगवान की, लड्डू गोपाल की, वृंदावन कृष्ण बलदाव की, श्री सीताराम महाराज की।
तब नंद बाबा ने कहा फिर से उनसे मान कि लड्डू गोपाल, आप रोज रोज कहते हैं मैं भगवान हूँ, आप हमें अपने पूर्व जन्म के दर्शन कराइए। तब उन्होंने लड्डू गोपाल जी ने आह्वान किया तो अपने पूर्व जन्म के दर्शन कराए। अयोध्या जी यहाँ राम लखन जानकी के रूप में, और इधर अक्षय कुमार जी हैं बराबर में। तो इन्होंने यहाँ दर्शन दिया है जो प्रयाग से आए थे, इन्होंने प्रयाग से आकर के दर्शन दिया है यहाँ। उसिया बलरामचंद्र की अक्षय वट धाम की, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ की। तो जो सारे राम भगवान थे, लड्डू गोपाल जी ने उसमें दांत का चिन्ह, दांत भी मार दिया था, जो दांत के चिन्ह भी हैं उसके अंदर, जो बिल्कुल दिखाएंगे, उनको ऐसे नहीं दिखाया जाता। उनके लिए पहले दान दक्षिणा चाहिए। अभी कई गाड़ी गई है, 100 रुपये दिखा रहे थे, मैंने किसी को दर्शन नहीं कराया। तो इसलिए भैया उनको बार बार परेशान नहीं किया जाता है, ये उनकी ठाकुर जी की चीज़ें हैं। आप दान दक्षिणा उनके लिए कीजिए तो अभी दर्शन कराएंगे। और सुदर्शन चक्र जैसे उनके अंदर ही, और आपको मालूम पड़ेगा, और आप अपने कैमरे से भी कैद कर सकते हो, देख सकते हैं कहाँ इनमें लड्डू गोपाल जी के नैने नैने दांतों का सुदर्शन चक्र जैसा अंदर दिखाई देगा। उसिया बलरामचंद्र की। तो यहाँ अकासुर, बकासुर, कंसासुर, इन 3 राक्षसों का भी उद्धार किया है लड्डू गोपाल जी ने। यहीं रहते थे अकासुर, बकासुर, कंसासुर, इस 3 राक्षसों का यहाँ उद्धार किया है लड्डू गोपाल जी ने। जब यहाँ पे अपने ये सब परिवार वालों को दर्शन कराया है, 33,000 कोटि देवी देवताओं में यहाँ दर्शन दिया है, इसलिए इनका नाम अक्षय वट धाम प्रयागराज महाराज है। सब तीर्थों के राजा हैं, ये जितने भी 84 कोस में तीर्थ हैं, सबके राजा हैं ये अक्षय वट धाम। In my previous video you can hear local pujari explaining the pastime of Sri Saligram Sila in Hindi. Sri Nanda Baba used to do worship of Sri Saligram Sila at this place. Once Lord Krishna came here with his cowherd friends and cows and noticed his father Nanda Baba worshipping a stone. Lord Krishna asked Nanda Baba, "What is this and what you are doing?" Sri Nanda Baba said, "This is Sri Saligram Sila." Lord Krishna said, "You are always busy with this stone. I am standing in front of you, ask me if you want to ask anything, I am the Supreme." Nanda Baba said, "Okay Krishna, you are also my Lord and this Saligram Sila is also my Lord," and they all went back home. Next day Lord Krishna came again. He took the Saligram Sila and put it in his mouth, and then climbed up on Aksaya Vata. Then Nanda Baba arrived and noticed the Saligram Sila is missing. Sri Nanda Baba asked everyone, "Where is my Saligram Sila?" But no one knew. Then Nanda Baba wondered where Krishna was. He went out near the Aksaya Vata tree and started calling Krishna, "Where are you?" Lord Krishna sitting on the tree replied, "Hum." Nanda Baba requested him to come down, but Lord Krishna just replied, "Hum," and did not come down. After many requests, Nanda Baba climbed up and brought him down from the tree. He then, with his fingers, pushed Lord Krishna's cheek and then the Saligram Sila came out from his mouth. Sri Nanda Baba then washed the Saligram Sila at Tapovana. Sri Nanda Baba said to Krishna, "Every day you say you are Supreme Lord, then I would like to take darshan of your previous birth." Lord Krishna gave darshan of Lord Rama, Devi Sita and Lord Lakshmana at this place. The local pujari will show the Saligram Sila that Lord Krishna put in his mouth only when you give donation of minimum 500 rupees. अंदर देखिए, इनके अंदर लगा करके हाँ ऊपर नीचे कराना हो तो बताना। और इनके अंदर देखिए, ऊपर नीचे साइडों में दिखाई देंगे कहाँ इनके नैने नैने दांतों के चिन्ह दिखाई देंगे। ये सुदर्शन चक्र जैसा दिखाई देगा, जैसे सुदर्शन चक्र था उस तरीके से ऊपर नीचे से देखिए ना, नीचे से लगाइए, नीचे से बदल करके लगाइए, उधर उधर से सही से लगा करके देखिए। पहले तो वैसे देख लीजिए, बगैर कैमरा के देखिए पहले तो। लड्डू गोपाल जी ने जो दर्शन कराए हैं अक्षय वट महाराज जहाँ भी स्थापित किए हैं, एक तो प्रयाग में है और दूसरे यहाँ हैं। दुनिया में तीसरा नंबर अक्षय वट जहाँ भी है, तीसरे हैं इंद्र के पास, जो सब देवताओं के साथ में रहते हैं। तीसरा अक्षय वट वहाँ है, 2 अक्षय वट यहाँ हैं धरती पर।
जो विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे आपको दर्शन के लिए। और ये कृष्ण इसलिए ने इनका इसीलिए नाम अपने मुंह में रखा था। जी लड्डू गोपाल जी ने ये रखा था सालेराम भगवान अपने मुख में। अच्छा। जी तो नंद बाबा इनकी सालेराम भगवान की सेवा करते थे, इसलिए इनको रखा था। वानी के नंद बाबा मुझे नहीं पहचानते हैं, मैं इनके सामने साक्षात भगवान घूम रहा हूँ, इसलिए उन्होंने उनको दर्शन कराया। यहाँ पे सब देवताओं को यहाँ आह्वान किया, 33,000 कोटि देवी देवताओं ने भी यहाँ दर्शन दिया है, इसलिए इनका नाम अक्षय वट धाम प्रयागराज महाराज है। सीताराम मंदिर अयोध्या से आए थे, अयोध्या से आकर के उन्होंने यहाँ दर्शन दिया है, इसलिए नाम इनका अक्षय वट धाम प्रयागराज महाराज है। सब तीर्थों के राजा हैं, ब्रज 84 कोष में जितने भी तीर्थ हैं सबके राजा हैं जी। बोलो सियावर। His Divine Grace Srila Prabhupada explains the beautiful pastime. Krishna, surrounded by his relatives, friends, cows, calves and bulls and glorified by their singing, again entered Vrindavana, which is always full of cows. While Krishna and Balarama were enjoying life in Vrindavana, in the midst of the cowherd boys and girls, the season gradually changed to summer. The summer season in India is not very much welcomed because of the excessive heat, but in Vrindavana everyone was pleased because summer there appeared just like spring. This was possible only because Lord Krishna and Balarama, who are the controllers even of Lord Brahma and Lord Shiva, were residing there. In Vrindavana there are many falls which are always pouring water, and the sound is so sweet that it covers the sound of the crickets. And because water flows all over, the forest always looks very green and beautiful. The inhabitants of Vrindavana were never disturbed by the scorching heat of the sun or the high summer temperatures. The lakes of Vrindavana are surrounded by green grasses, and various kinds of lotus flowers bloom there, such as the Kalhar Kanjatpala, and the air blowing in Vrindavana carries the aromatic pollen of those lotus flowers. When the particles of water from the waves of the Yamuna, the lakes and the waterfalls, touched the bodies of the inhabitants of Vrindavana, they automatically felt a cooling effect. Therefore they were practically undisturbed by the summer season. Vrindavana is such a nice place. Flowers are always blooming, and there are even various kinds of decorated deer. Birds are chirping, peacocks are crowing and dancing, and bees are humming. The cuckoos there sing nicely in 5 kinds of tunes. Krishna, the reservoir of pleasure, blowing his flute, accompanied by his elder brother Balarama and other cowherd boys and cows, entered the beautiful forest of Vrindavana to enjoy the atmosphere. They walked into the midst of newly grown leaves of trees whose flowers resembled peacock feathers. They were garlanded by those flowers and decorated with saffron chalk. Sometimes they were dancing and singing and sometimes wrestling with one another. While Krishna danced, some of the cowherd boys sang, and others played on flutes, some bugled on buffalo horns or clapped their hands, praising Krishna. "Dear brother, you are dancing very nicely." Actually, all these boys were demigods descended from higher planets to assist Krishna in his pastimes. The demigods garbed in the dress of the cowherd boys were encouraging Krishna in his dancing, just as one artist encourages another with praise. Up to that time, neither Balarama nor Krishna had undergone the hair-cutting ceremony, therefore their hair was clustered like crow's feathers. They were always playing hide-and-seek with their boyfriends or jumping or fighting with one another. Sometimes, while his friends were chanting and dancing, Krishna would praise them, "My dear friends, you are dancing and singing very nicely." The boys played at catching ball with bell-shaped fruits and round amalaki. They played blind man's buff, challenging and touching one another. Sometimes they imitated the forest deer and various kinds of birds. They joked with one another by imitating croaking frogs, and they enjoyed swinging underneath the trees. Sometimes they would play like a king and his subjects amongst themselves. In this way, Balarama and Krishna, along with all their friends,
played all kinds of sports and enjoyed the soothing atmosphere of Vrindavana, full of rivers, lakes, rivulets, fine trees and excellent fruits and flowers. Once while they were engaged in their transcendental pastimes, a great demon of the name Pralambasura entered their company, desiring to kidnap both Balarama and Krishna. Although Krishna was playing the part of a cowherd boy, as the Supreme Personality of Godhead he could understand everything past, present and future. So when Pralambasura entered their company, Krishna began to think how to kill the demon, but externally he received him as a friend. "Oh my dear friend," he said. "It is very good that you have come to take part in our pastimes." Krishna then called all his friends and ordered them, "Now we shall play in pairs. We shall challenge one another in pairs." With this proposal, all the boys assembled together. Some of them took the side of Krishna, and some of them took the side of Balarama, and they arranged to play in duel. The defeated members in duel fighting had to carry the victorious members on their backs. They began playing, and at the same time tended the cows as they proceeded through the Bandiravana forest. The party of Balarama, accompanied by Sri Tama and Vrisabha, came out victorious, and Krishna's party had to carry them on their backs through the Bandiravana forest. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, being defeated, had to carry Sri Tama on his back, and Bhadrasena carried Vrisabha. Imitating their play, Pralambasura, who appeared there as a cowherd boy, carried Balarama on his back. Pralambasura was the greatest of the demons, and he had calculated that Krishna was the most powerful of the cowherd boys. In order to avoid the company of Krishna, Pralambasura carried Balarama far away. The demon was undoubtedly very strong and powerful, but he was carrying Balarama, who is compared with a mountain, therefore he began to feel the burden, and thus he assumed his real form. When he appeared in his real feature, he was decorated with a golden helmet and earrings and looked just like a cloud with lightning carrying the moon. Balarama observed the demon's body expanding up to the limits of the clouds, his eyes dazzling like blazing fire and his mouth flashing with sharpened teeth. At first, Balarama was surprised by the demon's appearance, and he began to wonder, how is it that all of a sudden this carrier has changed in every way? But with a clear mind he could quickly understand that he was being carried away from his friends by a demon who intended to kill him. Immediately he struck the head of the demon with his strong fist, just as the king of the heavenly planets strikes a mountain with his thunderbolt. Being stricken by the fist of Balarama, the demon fell down dead, just like a snake with a smashed head, and blood poured from his mouth. When the demon fell, he made a tremendous sound, and it sounded as if a great hill were falling upon being struck by the thunderbolt of King Indra. All the boys then rushed to the spot. Being astonished by the ghastly scene, they began to praise Balarama with the words, "Well done, well done." All of them then began to embrace Balarama with great affection, thinking that he had returned from death, and they offered their blessings and congratulations. All the demigods in the heavenly planets became very satisfied and showered flowers on the transcendental body of Balarama, and they also offered their blessings and congratulations for his having killed the great demon Pralambasura. The previous life of Pralambasura and how he became demon. Kuvra, the king of the Yakshas, maintained a flower garden to grow flowers for his Shiva puja, but flowers were always being stolen from it, so he angrily pronounced this curse: "Anyone who steals flowers from my garden, be it demigod, human being or whoever else, will take birth on earth as a demon." King Hu had a son named Vijaya who wandered to many holy places, keeping a Gandharva in his hand and singing the glories of Sri Govinda until he arrived at the garden of Kajarotha. Without permission he began to pick flowers there, and when he heard about the curse he took shelter of the Yaksa king Kuvra and begged him for redemption. The king, being pleased with his prayers, said, "You are a peaceful devotee of Lord Vishnu, therefore do not be sad. In the Dvapara age Sri Krishna and Balarama will descend, and at that time you will be redeemed, by Sri Balarama's grace." This Vijaya took birth on earth as a demon and became a servant of Kamsa under the name of Pralambasura.
अक्षय वट, श्री सीताराम टेम्पल, surrounding area of the temple, Devi temple, and then Sri Ram temple, Akshay Vata, banyan tree, surrounded with the pond. माता है उनकी गलती चली आ रही है कान्हा की। अच्छा, उन्होंने भी नंद बाबा नंद रानी सब ग्वाल बाल सखाओं को सबको दर्शन दिया है माँ जगदम्बा ने। अच्छा, इस जगह पर। कार्तिकानी है, उनकी छोटी बहन है ये अच्छा, जी, जो खीर घाट पे है कार्तिकानी। कात्यायनी। उनकी बहन है ये छोटी। अच्छा, Whenever I upload new video, I update homepage glories of Holy Dhamma of my website Vatikandustan.org and also under menu. You can also press the YouTube subscribe button to receive notification. I am thankful to my subscribers and viewers for their support in my small devotional service for Srila Prabhupada. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Sri Sri Guru and Sri Sri Gauranga.